Are we rolling? Let's go. What's up everyone, welcome once again to this channel Smart Kicks, and this channel is all about shoes. Guys, today's video is extremely important. I'm finally doing a video on real and fake shoes. So बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, बहुत टाइम से कमेंट्स में आ रहा था बार बार कि रियल और फेक शूज़ लेकर आओ, बट सॉरी गाइज आई डिडंट हैव द रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. बट फाइनली आई गॉट अ फेक रियल शू, a fake, oh my god, what is this, a fake shoe and a real shoe finally. So this video is going to be extremely important for everyone who is into the sneaker space, but at the same time one of the most important qualities of any sneakerhead around the world is to efficiently differentiate between a real shoe and a fake shoe. So in this video I'm going to bring out 10 points which are differentiating factors between this real shoe and a fake shoe. You guys are ready? Let's just jump straight into this. Guys, before I start with this video, I want to point out that this fake shoe is not just a fake shoe. It's a shoe that is very near to original, and it was very difficult to find out differentiating factors, but yet we have been able to collect more than 10 points, but we are going to limit ourselves to 10 points only. Also, 8th, 9th and 10th point are going to be very crucial. So I will request you to stick around till the end of this video because those points are universal. I consider them universal, as using those points you can actually differentiate between any real and fake shoe. So are you guys up for it? Let's start with the first point. So guys, first and the foremost visible difference in these two shoes is this heel tab area. Now अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये heel tab area का जो suede leather portion है ये काफ़ी कम क्वालिटी का है या काफ़ी लो क्वालिटी का बोल सकते हो आप, ये काफ़ी रफ लेदर है. वेयरएज जो रियल शू का स्वेड लेदर है हील टैब एरिया के आसपास काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है, बहुत स्मूथ है. अगर आप अपने फिंगर्स रब करोगे यहाँ पर तो आपको इमीडिएट डिफरेंस समझ में आएगा. ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों शूज़ को बैक टू बैक रख के तो रियल शू में आप देख सकते हो कि जो हील टैब एरिया का लेदर है वो काफ़ी फ्लैट है, एंड एज वी मूव टूवर्ड्स द आईलेट इट बिकम्स मोर स्पॉन्जी एंड मोर फ्लफी. वेयरएज द फेक वंस ऐसा कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता. आप वो पीछे से देखोगे तो भी उतना ही फ्लैट दिखाई देता है, जब आप लेस के आईलेट्स तक पहुंचते हो तो भी उतना ही फ्लैट दिखाई देता है, कोई खास डिफरेंस नहीं, और वो इमीडिएटली समझ में आता है कि अच्छा यार ये थोड़े अजीब लग रहे हैं. मूविंग ऑन टू द आउटसोल, आई कांट रियली फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस, बट येस द कलर ऑफ द आउटसोल हैज़ अ स्लाइट डिफरेंस. आई डोंट नो इफ इट वुड बी विजिबल ऑन द कैमरा, बट अगर आप देख सकते हो तो आउटसोल जो फेक शूज़ का है वो थोड़ा लाइट ग्रे कलर का है, वेयरएज जो रियल शूज़ हैं उसका जो आउटसोल है वो थोड़ा डार्क ग्रे शेड है. बट एट द सेम टाइम इफ यू मूव टूवर्ड्स द मिड सोल, जहाँ पर आपका आउटसोल आके मिलता है मिड सोल पे, वहाँ की फिनिशिंग जो है, वहाँ की जो लाइन ऑफ फिनिशिंग, इट्स नॉट रियली गुड इन द फेक शूज. वेयर एज इन द रियल शूज यू कैन रियली फाइंड दैट द आउटसोल वेयर इट मैचेस विद द मिड सोल, द फिनिशिंग इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन. आई मीन इट रियली इज विजिबल दैट इट्स अ मशीन वर्क. यू कैन सी दैट सिंगल लाइन गोइंग थ्रू आउट द सोल in one uniform pattern, whereas in the fake ones it's not uniform at all. You can see here a slight difference as well, and at the same time, oh my god, look at this, there is a thread coming off already, whereas in the real shoe you can't even find a single thread coming off at any point. Now moving on to compare the leather quality of these shoes, now the real ones have got a tumbled finish. Now this is a normal tumbled finish for any Air Jordan 1. This is a genuine, you can see that there is a genuine tumbled finish to the leather given on the toe box area and even on the sides of the shoes. Whereas if you see in the fake shoes, I don't find these tumbled. In fact, they have cracks and it's weird to see. Honestly, it is very clear that they have tried to give them an excessive tumbledness to the upper leather, and that actually points out that shoe to be a fake one. Now moving on to the next point of difference is the colorway. Now this one is actually a turbo green, whereas this one doesn't looks like a genuine turbo green colorway. Also, it seems that something has been painted over the suede leather just to give it a turbo finish. I also feel that this difference in the colorway can only be experienced if you have both the shoes in your hand, because the difference is so slight. Guys, there is this very crucial part of the shoes while we are comparing these real and the fake ones, and that's the shoe tongue. Now if you see the fake ones, the shoe tongue quality is very inferior. बहुत ही पतला shoe tongue दिया हुआ है, जो अंदर का sponge है वो भी बहुत ही कम क्वालिटी का है. Whereas in the real ones, the shoe tongue is of very impressive quality. The sponge is very thick, it's very soft and fluffy, and the exposed foam styling is pretty visible. Now there comes the most important point on the checklist, and that's the Air Jordan Wings logo. Now if you see in the real ones, it's very visible that the Air Jordan Wings logo is embossed on that suede overlay, whereas in the fake ones it's not really embossed. The real ones also have a metallic finish within the logo, whereas the fake ones doesn't have any metallic finish. Now shifting your focus to this text which is here, SP19 Air Jordan 1 High OG. Now this one is very subtle here. It's not very highlighted, like you can see it, but then it's not bold.
Whereas in the fake ones, you can clearly see that this one is bold, this one has been given a different color to just pop on that white base. Now, as I promised you in the beginning of the video, that 8th, 9th and 10th point are going to be very crucial. So here comes the 8th point of difference. So if you see the made in tag, which is generally inside the shoe tongue, you can find in the real ones that it is written made in Vietnam. Whereas in the fake ones, it is written made in China. So guys, even though these are made in China and these are the original ones that are made in Vietnam, this actually cannot be our base point for considering that if these are real or if these are fake. What is more alarming is that अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेड इन चाइना का टैग यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही लो क्वालिटी की है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत लो क्वालिटी की है, और मेड इन वियतनाम का जो टैग है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. नाउ लेट्स डाइव इनटू द शूज वेयर देयर इज द साइज टैग. नाउ ओरिजिनल वाले में आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइज टैग की प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और बार कोड मेंशन्ड है वहाँ पर, जबकि फेक वाले में QR कोड मेंशन किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि सारे फेक शूज़ में या सारे रियल शूज़ में QR कोड नहीं होता, काफ़ी रियल शूज़ में भी QR कोड मिलेगा आपको. बट आप प्रिंटिंग की क्वालिटी देखो, जहाँ पर फेक शूज़ में प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ख़राब है, वहाँ पर स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि रियल शू में स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट को, और वहाँ पर प्रिंटिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी हुई है. नाउ आफ्टर द साइज टैग, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आर दीज इनसोल. नाउ इफ यू सी इमीडिएटली यू कैन फाइंड there is a difference in the color. This is the original one. This one actually matches with the color of the heel cushion. You can see immediately that it matches the heel cushion. Whereas in the fake ones, there is no matching as such. I mean, it's a weird color combination which is given to these insoles. Those are the 10 most important differentiating factors between this real shoe and the fake shoe. I hope this video would help elevate your knowledge and information base around sneakers, so that whenever you step out to buy a sneaker for yourself, you only pick the authentic ones. Please share this video with your friends also, and don't forget to subscribe to the channel before you go away. If you feel that you have any additional points or thoughts related to this video, please drop that in the comment section below. Till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.